मैं SDIC यानी स्मार्ट डेटा फॉर इंक्लूसिव सिटीज़, जो एक यूरोपियन कमीशन द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, उसका मैं प्रमुख अन्वेषक हूँ। शहरवासियों के आवश्यकताओं के अनुसार डेटा और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को किस प्रकार उत्तरदायी बनाना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं, ख़ास करके किसी आपात स्थिति या संकट के समय में, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान। No city can be sustainable and inclusive unless we take care of the poor. स्मार्ट सिटी हमारे यहीं से मोहल्ले से लग के चालू है। Banganga, as we found out, was a very interesting space in terms of a settlement. It has a very unique history, demography and topography. These problems had existed since ages and were compounded over time as slowly encroachments started getting denser and denser. Small parcels of land started getting occupied, and Banganga went from a small settlement to a settlement that houses more than 22,000 people today. मैं 40 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। यहाँ पे पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लोग आके अपनी झुग्गियाँ बनाने लगे और रहने लगे। यहाँ कम से कम 50 साल हो। गैस कांड के बाद ये सब झुग्गीकरण यहाँ आया। अगर बाणगंगा में नाला है, कोई जानबूझ के मकान नहीं बनाता, उसको आवश्यकता थी उसने बना लिए। तो ये तो जीवन जी रहे हैं सभी लोग, अपने आप को सब एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, गलियों में रह रहे हैं, कुलियाँ में रह रहे हैं। The unique topography of Banganga has a stream that runs throughout the settlement, and the stream went from a very clean source of water that the community would use to wash their utensils, to take a bath, to a extremely poor ecological hazard that exists in the city today. The transit walk, the focus group discussions, and the service opportunity maps, resource maps that we made were very important tools for us to understand what the exact problems of the community were. यहाँ जो ये जीनी बनाई गई है स्मार्ट रोड की, और ये लोहे की है, जिसमें हमको चढ़ने उतरने में, बीमार होने में चल नहीं सकते। मेरे साथ मेरी और भी बहनें हैं जो चलने में तकलीफ आती है। पानी गिरता है तो पैर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं, उससे जीने से बड़ी परेशानी होती। छोटा बच्चा लेके, सब्जी लेके, सामान लेके बिल्कुल नहीं चढ़ पाते, और कोई घटना हो जाए अचानक हमारे इधर तो हम कैसे भागेंगे। There's water coming in from higher locations into Banganga, and that creates a problem of an urban flood. बरसात ज़्यादा होती है तो सारा गंदगी हमारे घरों के अंदर घुस जाती है, तो इससे हमें बहुत दिक्कत होती है। Banganga is not facing these problems just because of its own existence. The new infrastructural developments all around it are contributing to the problems that are faced by the people in Banganga. It is important that technical solutions are blended with people's knowledge. रास्ते में चलने की दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ हर वक्त रास्ता बहुत छोटा है, निकलने की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोगों को। बहू बेटी सही से निकल नहीं पाती यहाँ से। तो कचरा की ये गली इतनी छोटी छोटी कि कचरा की गाड़ी यहाँ नहीं सकती, ये अधिकतर तो नालों में फेंकते कचरा। The qualitative data that we encapsulated was captured in our GIS softwares. The identification of important landmarks led to understanding the mobility issues of the community, and the community consultation process helped us understand what the community wants in detail, what are the parts that work for them and what are the parts that don't. And with that, we did some analysis that look at the network, at the allocation and the hydrological aspects of all this area to produce some solutions in terms of mobility and flooding, waste disposal, emergency services, and agglomeration points. We know from the analysis that there is a lot of very porous and dense urban network within Banganga, with many pathways that become inaccessible during the wet season. So which pathways to improve, right? To allow everybody to get to relevant facilities and entry points. We have a lot of places, but we have to look also to the areas less affected by flooding. And by doing that, we can do an alternative network that allows everybody to move freely, even in the wet season. And a similar analysis we did for the waste management problems and solutions, and we did
an analysis for emergency service solutions, so where to put vaccination points, where to put testing points, etc. And also a final one with reducing agglomeration solutions. नाले को मतलब ऐसा बना दें कि मतलब ऊपर से ढकना चाहिए नाला, बीच बीच में चैम्बर बना दें जिसमें से हाँ मतलब कचरा निकल सके. To institutionalize this transformation, NIOA is now in the path to document, capsulize and disseminate the knowledge and the learnings through the National Urban Learning Platform NULP, which is hosted at NIOA. The current model envisaged through the pilot can serve as a model for helping other city governments across the country to realize the benefits of smart cities in a post-pandemic world. तो हम लोगों से भी थोड़ा पूछ लिया जाए, सुझाव लिया जाए, तो कोई पूछता ही नहीं है. समाधान तो बहुत से हैं, अगर चाहे तो पब्लिक के साथ बैठ के और भी पब्लिक से पूछा जाए उनकी भी समस्याएं. We believe that this GIS-based participatory decision-making process can be of great help for Banganga and their citizens, and also for smart cities missions of improving the livelihood of the most vulnerable population. इसी विचारधारा के साथ हम भोपाल, जबलपुर, कोची और फरीदाबाद शहरों में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और महत्वपूर्ण रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता को स्थानीय ज्ञान से जोड़ना चाह रहे हैं.